Am I audible? Good evening and welcome everyone on day 4 of WebVerse, navigating the multiverse of development. Today we have Mr. 𝗂𝗲𝗂𝗲𝗂𝗧. He is a software development engineer at 𝗰𝗃. He has also laid foundation of CFC with different names. He has mentored lots of students in past and still mentoring many students. In today's session, we will begin with review of materials covered in the first 3 days, followed by the creation of 3 examples, a to-do app, a timer, and a weather app. Interesting. So gear yourself up for it and make sure to code along. Thank you. Over to you, Atul sir. Hi everyone. Hello. Good evening, sir. तुम लोग हमारी कौन है ना? Okay, so see today's session would be hands-on. Okay. So I want you guys to unmute your mic and speak a little. If you want, you can also turn on your webcam. तो मुझे समझ आएगा कि तुम लोग को समझ आ रहा है या नहीं. Okay. So we'll start by a simple quiz where I'll ask some questions about you and what you have learned till now. Okay. Language का बता दो. English or Hindi, what are you like comfortable with? Yeah. Okay, share my screen. I'm not allowed to share my screen. Okay, you guys can scan this QR code and join it. Hey, Atul. Sorry. आदर्श, कौन सा आदर्श भाई? वही हो भाई जो तो सोच रहा है। Okay. बिल्कुल. ये फर्स्ट सेशन है कि इसके पिछले सेशंस में भी यहाँ ज्वाइन किए थे? नहीं, मैं था बट मैं कुछ बोल नहीं रहा था. नहीं, मैं क्या आज पहली बार ज्वाइन किया, कल एग्जाम था इसलिए मैं आ नहीं था करके. Okay.
अभी तक 5 ही लोग आए हैं यहाँ पे। स्कैन नहीं हो रहा क्या किसी का? वॉइस ज्वाइन कर लो जल्दी से। आई वोंट वेट वेरी लॉन्ग, ओके? काफी काफी लेट आ रहे हैं लोग। हाउ मेनी पीपल? आई सी 28 पीपल्स इन द मीटिंग, और क्विज अभी सिर्फ 8 लोगों ने ज्वाइन किया है। वो बस लिंक खोलने से ज्वाइन हो जाना है कि उसमें कहीं और क्लिक करना पड़ेगा? आई गेस ज्वाइन हो जाएगा। ये लाइक दबा दो। हाँ, लाइक क्लिक किया था। 9, 10। ओके, जो लोग नए हैं, scan this QR code or go to this website, enter this code and join the quiz. जल्दी ज्वाइन करो। I'll start it in 5-10 minutes. Sorry, 2-3 minutes. It's just a simple quiz of what we have learned, and I'll ask some questions about you guys. So फेल होने के डर से कोई skip मत कर देना। We only have 20 people. बाकी के 10 लोग scared of quiz. Okay, I think we should start now. 21 players. I'm starting. किसी के लिए रुकना है? Anyone who wants to join and is not able to join the quiz. No one, I guess. So I'll start. Okay. This looks like a bug. Okay, so there are a lot of third year students. And I guess this is Adarsh. नहीं, मैंने वोट नहीं किया था।
अरे क्या बोला ना तो सारे क्वेश्चंस में एक एक पॉइंट था। तो भाई वोट करो तुम लोग। हाँ यार देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सर्टिफिकेट के लिए आया है चलो बता दो। नाम तो आएगा नहीं। उप्स आई स्किप्ड इट। ओ 8 लोग तो सर्टिफिकेट के लिए आए हैं। कौन है वो 8 लोग? लीव इट। ओके सो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। In ES6, how do you declare a variable? Okay. Multiple choice है ना, तो I think I forgot to tell you that. Some questions would be multiple choice. ये लैंग्वेज कौन सा है जिसकी बात चल रही है? मेरे को बिल्कुल नहीं पता कंटेक्स्ट यहाँ पे। Okay, JavaScript को ES6 बोलते हैं. If anyone is confused, ES means ECMA, ECMA script. Okay. तो ECMA script का implementation is JavaScript और ECMA script के versions होते हैं. तो बहुत सारे वर्जन्स है. ES6 के ऊपर React बना है. So anything for which you need React, ES6 के ऊपर चलता है. I guess सब वोट कर लिए. Okay. So let's look at the wrong answers. Okay. Right answer जो लोग किए हैं very good. 15 लोग को पता है. This one x equal to 10. This is wrong because ये C++ का syntax है. If anyone did this, I want them to know कि JavaScript dynamic language है. Okay. So x is equal to 10 अगर तुम करते हो, so x is a number, but अगर तुम x equal to hello world कर देते हो, तो x is a string. Okay, so it's different than C++. Then war वाले भी सही हैं. war वाले भी सही हैं. war का issue ये होता है कि war is a global variable. So अगर तुम्हारी एक वेबसाइट में 5 स्क्रिप्ट्स रन हो रही है, all 5 of them will override each other. So avoid using war. Const x equal to 10 ये भी सही है. And this one 6th, ये लास्ट वाला ये गलत है क्योंकि when you declare a variable as const, you have to give it a value. क्योंकि वो constant है ना, तो तुम उसको बाद में assign नहीं कर सकते. So you have to assign it initially. Okay. Let's look at next. Okay, I don't know why this photo is coming here. Probably a bug. Okay, which array method can be used to increment each number in array 1, 2, 3, 4 by 5? तो हमारे पास array है 1, 2, 3, 4, 5. हमको उसको convert करना है 6, 7, 8, 9 में. हर नंबर पे +5 होना चाहिए. तो कौन सा मेथड यूज करना है? मैप, फॉर ईच, फिल्टर, सम. Everyone has voted. Okay. A lot of you have voted for each. Okay. I'll explain it practically. मुझे याद दिलाना कि why you should not use for each and go for map.
Okay, so एक array है 1 2 3 4. I want to remove all the even numbers from this. So कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? मैप, फॉर ईच, फिल्टर और सम? Yeah, this is easy one. If you guys know English, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, so you can figure it out. Most of the programming is guessing stuff and writing it, then running it. फिर error आता है तो you can fix it. Okay, so take your chances. सर आप कर्सर पॉइंट करके हिंट दे रहे थे वहां। वो मैं हिंट दे रहा था क्या? ओके, तभी सब सही करती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नो हिंट्स. Which array method can be used to remove all even numbers? ये फिर से आ गया. ओके ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लो, चेंज हो गया क्वेश्चन. एक एरे है 1 2 3 4 एंड वी हैव टू चेक वेदर और नॉट उसमें कोई भी इवन नंबर है या नहीं. सो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ये इसमें मल्टीपल करेक्ट है आई गेस, सो मेक श्योर कि दोनों करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो. हम्म, आ, हम्म, ओके, सो आई डोंट नो मैप क्यों सेलेक्ट किया किसी ने. You can do it with for each. Okay, I get that, but you shouldn't. Okay, so the thing about array functions is जितने भी array function है ना, splice, for each, map, sum, filter, every, you can do these with for loop. Okay, for each is very similar to for loop. You can do all these things with for each, but the thing is जो चीज जो करने के लिए सबसे appropriate है, we should use that, so our code looks more like English and less, cryptic. Those who have selected sum, very good. Sum is the correct answer. Filter is the second best option. What you can do is you can filter, then check the length. If length is 0, then it's false. If it's greater than 0, then you have an even number. Okay. Okay. A React component is a function that returns JSX object. ये multiple correct हो सकता है. Okay, so सोच के बोलना. JSX object, web application, or an array. For those of you who don't know what JSX is, HTML is JSX. ज़्यादा दिमाग मत लगाना. HTML is JSX. इंटरव्यू में मत बोलना ये चीज, but it's for understanding. Object web application. मुझे ना पता नहीं चल रहा है. Has everyone voted? Okay, so it looks like you guys think JSX.
some guys thinks object. वेब एप्लीकेशन पे भी कुछ लोगों ने टिक किया है एंड एरे पे बहुत कम लोगों ने टिक किया है. Who has ticked एरे? एक बार मीटिंग में हैंड रेज करना. Just want to check. Okay, so I guess नमन. तुम लोग को आता है क्या रिएक्ट पहले से? तुम चारों में से किसी को रिएक्ट आता है पहले से? ओके, आता है थोड़ा. ओके, सो ऑब्जेक्ट मैंने सोचा नहीं था, बट अभी आई थिंक इट्स अ राइट आंसर बिकॉज एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो दैट्स आल्सो अ राइट आंसर. यहाँ पे मैंने गलत डाला है, बट या दैट्स फाइन. वेब एप्लीकेशन इज अ रॉन्ग आंसर. ये ऐसे ही डाल दिया है. वेब एप्लीकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती जावास्क्रिप्ट में. एटलीस्ट इन व्हेन यू आर कोडिंग देयर वुड बी नो थिंग एज वेब एप्लीकेशन. You will make application, do not return it. Array is a right answer. So अभी भी कोई फोर्थ रहता है. So you can return multiple tags or elements from the component. JSX is the most common thing you guys are going to return from a component. इसके अलावा तुम लोग string और null भी return कर सकते हो. That also works out. Okay. Inputs of a React component is called, what is it called? State, effect, props. So if you have read a basic thing first year में, what is software? Okay. Okay, props. State किसी ने बोला है. If someone wants to know why they are confused, या फिर ऐसे तुक्का मार दिया. Someone has doubt in it, कुछ confusion है, so they can ask. Because state is the wrong answer. So if you have read the basic definition of a software, okay, it's something that takes an input, does processing, and gives output. Okay. अब तुम दुनिया का कोई भी सिस्टम ले लो, तुम एपीआई एंड पॉइंट ले लो, तुम रिएक्ट ले लो, तुम व्यू ले लो, ठीक है. ऑल ऑफ दीज हैव दीज 3 स्टेप्स. ओके, तो इनपुट ऑफ अ कंपोनेंट इज जस्ट इनपुट ऑफ अ फंक्शन. उसको प्रॉप्स बोलते हैं. ओके. ओके, यहाँ पे कोड है छोटा सा, उसका आउटपुट बताना है. I guess this one is simple. We all will guess it. ये किसने किया है? आई थिंक यू वर थिंकिंग समथिंग, बट उतना नहीं सोचना था. नथिंग विल बी डिस्प्लेड. ओके.
ओके, सो हम लोग को एक काउंटर ऐप बनाना है जिसमें एक इंक्रीमेंट बटन होगा और एक डिक्रीमेंट बटन होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करने से ऑब्वियसली वो बढ़ेगा काउंट और डिक्रीमेंट करने से कम होगा। सो हाउ डू वी स्टोर द काउंट? फॉर सम रीजन आई कैन नॉट सी द सेकेंड ऑप्शन। Can anyone turn on the mic and read the options? Okay, guys have voted. So let count पे का okay, sorry. मैंने इसका आंसर गलत डाल लिया। द करेक्ट आंसर इज दिस वन, जिसको मैक्सिमम लोगों ने किया है। 6Q नहीं है। ओके भाई तेरा योगराज तुम्हारा माइक ऑन है। Okay, anyways. So see why you don't to let count, वो मैं आगे बताऊंगा, but this is the correct way. So any state that you want or any variable that you want, जो तुमको change करना है in future time, उसको तुम use state में define करते हो। The 19 players are ready. Okay. So जब कंपोनेंट लोड हो रहा है या स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, एट दैट टाइम आई वांट टू मेक अ नेटवर्क कॉल टू एन एपीआई और मुझे कुछ डेटा फेच करना है। सो व्हाट्स एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू मेक दैट कॉल? There is a fetch fn, that means a data fetching function. Okay, a lot of people have selected the correct answer. Good. I'll go deeper into why we do this. Okay. Question 10 of 10. Okay, so it's last question. Okay. You just have to tell the output. Okay. So the reason for adding this question was how familiar you guys are with the overall syntax of React, and I guess तुम लोग को समझ आ रही हैं चीजें। Okay. यहाँ पे prop pass हो रहा है. This is the component. I think we can do some hands-on today. Oh, we have one more question. तुम लोग वोट कर सकते हो क्या इसके लिए? Okay, yeah, you guys can vote. This is a multiple correct question, so सोच के आंसर करना।
Some people are joining it like really late. हाँ, सबने वोट कर लिया. Okay, I don't know why ये गलत है. मुझे ना पूरा कोड दिख नहीं रहा है. Wait, don't want to confuse you guys. Okay, so you saw this. Okay, so the correct answer is एक unordered list डिस्प्ले होगा स्क्रीन में. उसमें 3 चीजें डिस्प्ले होंगी, एप्पल, बनाना एंड चेरी. फॉर सम रीजन मैंने आंसर की गलत डाल दी थी. द करेक्ट आंसर इज दिस वन. एंड those who have selected this, I don't know if you are seeing some other version of the code, but we have a key prop here, so we won't get any warning. I can explain more about keys later when we actually do the coding. This is just for fun. Okay. Let's see who has scored the most. Nidhi has scored the most, but answers were wrong, so we won't take it seriously. Good work, Nidhi. Okay, so that was the quiz. I guess you guys are ready for some hands-on experience. Okay. We will make very basic stuff today. Okay. ज़्यादा दिमाग वाला काम नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं करेंगे, but it will require some thinking. Okay. तो can you guys please raise hands? कितने लोगों को अपने लोकल कंप्यूटर में कोड करके ट्राई करना है? So I'll make sure कि तुम लोग साथ में रहोगे. Okay. You won't be left out. 3 ही लोग हैं और बाकी लोगों को हैंड रेस करना नहीं आता. ओके, आई गेस 2 3 4 5 लोगों को ट्राई करना है. 6 लोगों को ट्राई. ओके, डू यू गाइज हैव द लिंक फॉर द कोड? Yes, it was sent in the WhatsApp. I'm again sending it in the chat. If you know Git, clone it. Otherwise, there's a download button. I'll tell you how to download it. Just come here. यहाँ पे download zip है, वो कर लो. Okay, I've sent you the link. You can download the zip, or you can clone it if you know Git. Okay. If you guys don't have Node installed in your computer, anyone जिसके पास Node नहीं है और उसको ट्राई करना है,
5 लोगों का हैंड्स अप है जिनके में नोड नहीं है और उनको ट्राई करना है, सिर्फ वही हाथ रेस करेंगे. ओके, सो सी इट वाज इट्स ओके. सो आई गेस मुस्कान एंड जैस्मिन का आई गेस मुस्कान एंड जैस्मिन वांट्स टू ट्राई आउट बट उनके पास नोड नहीं है कंप्यूटर में. इज इट ओके? सो इट्स जस्ट मुस्कान देन. Okay, so everyone has node, right? Unless you guys will मतलब mic on करके बोलोगे नहीं, it would be very confusing. नोड है इसमें, लेकिन कभी चलाया नहीं हो, तो जैसे इसमें एक Okay, कंसोल खुल रहा है, उसमें लिखना क्या है, मतलब okay, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि कैचअप करने के लिए जो यहाँ पे लेवल चल रहा है. okay. देखो कैचअप किसी को नहीं करना है. ओके, आज के सेशन का टॉपिक था रिडक्स, बट वी हैव चेंज्ड इट टू हैंड्स ऑन बिकॉज आई वांट यू गाइस टू लर्न समथिंग. ठीक है? सो आई वांट कि सब लोग जो भी अटेंड किए हैं और ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई करके जाओ. डजेंट मैटर कितना टाइम लगता है. आई हेल्प यू. यू कैन शेयर योर स्क्रीन. ओके, तो आदर्श तू कर सकता है स्क्रीन शेयर, अगर तुझे तेरा देख के बाकी लोग की भी हेल्प हो जाए शायद. एक सेकंड. ये इसमें क्या करना है फिर? ओके, नहीं, इतना नहीं करना था. डाउनलोड द कोड डाउनलोड कर लिया तू? हाँ, ये है. हाँ, उसको अनजिप कर, ओपन दैट फोल्डर. अब इस पे टर्मिनल खोल. ने आता है? ओके, आता है. कौन जिनको से नहीं में? कमांड प्रॉम्प्ट डेप्रिकेट हो गया क्या? ये यहाँ मैं ऐसे करके कभी कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोला हूँ. एक काम कर. नहीं, ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ. वो जहाँ पे फोल्डर है ना, वहाँ पे CMD लिख के एंटर कर दो. जहाँ पे फोल्डर का नेम है, हाँ, CMD एंटर. ओहो. ओके, ओके, नाउ राइट npm i. कैसे देखा? हाँ, ऐसे? हाँ, आप एंटर कर. I is a short for install. Okay, so how React works is बहुत 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 सारी लाइब्रेरीज का कलेक्शन होता है वो. ठीक है? And when you do npm install, they all get downloaded in this node modules folder. अब npm run dev कर. अंडरस्कोर की स्पेस है यहाँ पे कि कुछ Space, नहीं है? space, space dev. हाँ, I hope it runs. Okay, चलो. ये URL खोलना ब्राउजर में. ये यही आना था ना आउटपुट इसका? हाँ, तो यहाँ पे 3 एप्स हैं. ऑर्डर मैंने थोड़ा सा फकअप कर दिया. आई थिंक द टाइमर शुड बी द फर्स्ट थिंग टू लर्न.
टू डू लिस्ट खोलना। तो टू डू लिस्ट के लिए तो मैंने CSS डाल दिया है, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू फोकस ऑन CSS। आई वांट कि तुम लोग लॉजिक इम्प्लीमेंट करना सीखो, ओके। बट फॉर द अदर टू मेरे पास टाइम नहीं था, तो लेट्स मेक अगली थिंग्स देयर, ठीक है। विनय, सम विनय इज देयर, ओके। So I think we should start with timer. योगराज can demonstrate कि कोड सैंडबॉक्स में इसको कैसे रन करना है। जो अभी आदर्श ने किया वो अगर किसी से नहीं हो रहा, सो प्लीज सेंड अ मैसेज, हम लोग सैंडबॉक्स का डेमो दिखा देंगे, क्योंकि अभी नोड इंस्टॉल करना इज अ बिट हार्ड, थोड़ा टाइम लग जाएगा। एनीवन? किसी को कोड सैंडबॉक्स सेटअप करने में हेल्प चाहिए? ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? प्लीज स्टार्ट। वो प्रेजेंट है कि प्रोफाइल ओ, पिक्चर है? प्रोफाइल, आई डोंट नो। प्लीज स्टार्ट वेबकैम, सम वेब पर है। ओके, आई गेस सबका सेटअप हो गया लोकल में। प्लीज ट्राई आउट अभी मेरे साथ में, आई कैन क्लियर योर डाउट्स। बाद में तुम लोग डाउट्स लेके आओगे ना, तो it would be a bit harder to learn. Okay, let's start. Uh, I wanted to start with to-do list, but the thing is, यहाँ पे बहुत सीखना पड़ेगा तुमको. So let's go with timer. Okay. Oh. Oh, wrong browser. एडिटर इसके लिए कौन सा यूज करना चाहिए? क्या? एडिटर 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 VS कोड है तेरे पास? हाँ है। Okay. ओके, सो अभी हम लोग ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उसके लिए आई वांट कि सब लोग अपना माइक ऑन कर लो। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि सिर्फ मैं सोचूं और मैं करके चले जाऊं और तुम लोग सीख जाओगे। सो यू गाइस हैव टू थिंक कि व्हाट वी हैव टू बिल्ड, हाउ वी हैव टू बिल्ड, ओके। Okay, so we have to build a timer. If you go to the code, there is already a timer.jsx. I don't know why everyone is joining, maybe leaving. Okay, so see, the thing about front-end projects is कि you जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ सुंदर UI समझ आता है। इफ यू वांट टू शो ऑफ योर प्रोजेक्ट, गो टू ड्रिबल, इसमें 3B है, choose any of these cool looking UI and try to get inspiration from it or replicate it, okay. And थोड़ा सा UI का भी आइडिया लग जाता है, okay. So this is the timer app, countdown app. We'll look at it and we'll see कि कौन कौन सी चीजें हमको बनानी है. First thing is there should be a display for time, okay. And CSC से कितने लोग हैं? Okay, so there's a subject called
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसमें तुम लोग कुछ सीखोगे दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन. ओके, we are thinking कि what should be the functions that app should perform. ठीक है, पहले functions पता होना चाहिए, तब तो डेवलप करेंगे. So there should be a display of time, then there should be a play pause button. Okay, play pause. Then there should be a reset button. यहाँ पे एक delete सा दिख रहा होगा. It shouldn't be delete, but okay. स्क्रीन शेयर किया क्या? Okay, मैं बिना स्क्रीन शेयर के बात कर रहा हूँ. और कोई बता ही नहीं रहा है. Funny. कितने लोग नहीं सो रहे हो, एक बार हैंड रेस करना. ओके, तो 18 लोग नहीं सो रहे हैं, बाकी तो सो रहे हैं. गुड, वी हैव 50% अटेंशन. बहुत कौन से टैब्स हैं? सॉरी, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था. सो वी आर राइटिंग डाउन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन. एक डिस्प्ले होना चाहिए, प्ले पॉज का बटन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? रीसेट बटन होना चाहिए. ओके, टू स्टार्ट फ्रॉम द ओके, अब इसको इसका ब्रेकडाउन सोचते हैं, हाउ वी कैन डू दिस. सबसे पहला, तो व्हाट आई मीन बाय ब्रेकडाउन इज, हमारे पास एक टास्क है कि वी हैव टू मेक समथिंग लाइक दिस और दिस. वी हैव द स्पेक्स कि हमको क्या फीचर चाहिए. UI में आई वोंट गो इनटू CSS फॉर दिस वन. नाउ वी हैव टू ब्रेक डाउन दिस बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स. ओके, क्योंकि हम लोग एक बार में एक ही चीज लिख सकते हैं. वी कैन नॉट क्रिएट होल ऐप इन वन गो. सो कोई लेट मी डू अ फ्यू, उसके बाद तुम लोग बताना you want to want. Create a state to store current time. ओके, सो हम लोग टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, उस टाइम को कहीं पे सेव करना पड़ेगा, तो हमको वो क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, एंड वी नीड टू ऐड अ बटन. ओके, देन when button is pressed, we have to decrement the count. और किसी को आइडिया that what do we want कि it gets decremented every 1 second? Anyone in chat can tell me. किसी को कोई मेथड पता है जिससे हर 1 सेकंड के बाद काउंट डिक्रीमेंट हो जाए? कल प्रिंस, ओके, कल परसों किसी ने सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट का कॉन्सेप्ट बताया. ओके, आई गेस यू डोंट, नहीं बताया ना? ओके, so I'll give you a brief of set interval before we start. If एक और टिप, अगर तुम लोगों को पता नहीं है जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखे, so this is a place where you can try. ओके, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पे खेल सकते हो. ओके, कुछ भी कर सकते हो. So first we'll create it.
set timeout. Is it visible enough? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? Yes, no. Okay, see, so the set timeout, इसका क्या काम होता है? If you have done Python or something, कभी कभी ना तुमको कोड एक बार में एग्जीक्यूट नहीं करना होता है. Sometimes you want कि थोड़ा रुको फिर एग्जीक्यूट करो. जैसे लेट्स से लोडिंग स्क्रीन है, ओके, वो आती है और फट से चली जाती है. सो यू डोंट वांट दैट. तुमको चाहिए कि लोडिंग स्क्रीन थोड़ा रुके, तुमने मेहनत करके बनाया है, लोग देखें उसको. सो वी वांट टू ऐड अ डिले. सो वी वांट दिस फंक्शन. आई थिंक वी शुड डू इट दिस वे. Function greeting, okay. So every time we'll call this greeting function, hello will be displayed on your console. But हमको ना ये instantly नहीं चाहिए. देखो, every time I do it, it happens instantly. I want a delay of 1 second. So what I'll do, I'll call this set timeout method. वो अभी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पेज ही वो क्या बोलते हैं दिख रहा है? वही पेज दिख रहा है, तो किसी और पेज का डिस्कशन थोड़ी चल रहा है कि ऐसा. Okay, I shared a window. अब तुम लोग को दिखेगा. अरे यार, तुम लोग जल्दी से बताया करो, लोग डाउट में रहते हो. ओके, तो देखो, एक फंक्शन है ग्रीटिंग. एवरी टाइम आई एग्जीक्यूट ग्रीटिंग, ओके, आई राइट ग्रीटिंग एंड आई एंटर. वो फट से हेलो प्रिंट कर देता है, बट आई डोंट वांट दैट. मुझे चाहिए कि वो 1 सेकंड बाद प्रिंट हो. उसके लिए हम लोग सेट टाइम आउट का यूज करते हैं. सेट टाइम आउट, टेल हिम द फंक्शन यू वांट टू डू. उसको टाइम बता दो, ये मिली सेकेंड से, ओके. सो 1 सेकेंड इज 1000 मिली. सी, ये सॉरी डील है. इसको 5 कर देता हूँ, अच्छे समझ आएगा. देखो, अब वो नहीं है हो रहा प्रिंट, वो 5 सेकंड बाद ही प्रिंट होगा. ओके, आई थॉट नहीं होगा. नाउ यू कैन ऐड एनी फंक्शन हियर. तुम बिगनर हो तो पहले फंक्शन बना लो, फिर उसको यहाँ डाल दो. इफ यू आर प्रो तो किसी ने एरो फंक्शन के बारे में सिखाया होगा, ठीक है. यू कैन ऑल्सो डू दैट. नाउ एक और फंक्शन है जो सेट टाइम आउट जैसा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, सेट इंटरवल. एंड व्हाट दिस डज, उसको देखना ध्यान से. इंटरवल, ओके, सेम सेम दिखता है फंक्शन. जैसे पहले कॉल किया था वैसे ही करेंगे, बस नाम डिफरेंट है और बिहेवियर डिफरेंट. ओके, 3 सेकंड बाद इसने प्रिंट किया सेट इंटरवल. अब ये काउंट देखो, ये हर 3 सेकंड में इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते रहेगा. हर 3 सेकंड में ये काउंट इंक्रीज होते रहेगा. देखते रहना, हो रहा है ना. 4 5 के. नाउ इफ आई वांट टू स्टॉप इट, उसके लिए फंक्शन होता है क्लियर इंटरवल. क्लियर इंटरवल इज 8. ओके, सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे ना इसने एक आईडी रिटर्न की है. वो इंटरवल की आईडी होती है. इंटरवल की आईडी 8191. सो इफ यू वांट टू स्टॉप इट, यू हैव टू क्लियर इट. अब वो हो गया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. वो क्लियर से क्या होता है? क्लियर से देखो, एक बार तुमने उसको सेट कर दिया तो वो बार बार कॉल होते रहेगा, ठीक है. बट 5 सेकंड का, जैसे 5 सेकंड का डिले अपन सेट कर दिए, हाँ, तो वो
उसको रन हो रहा है बैकग्राउंड में और 5 सेकंड नहीं हुआ और क्लियर करो तो वो स्टॉप हो जाएगा, वैसा लॉजिक है ये? हाँ देखो, इंटरवल हेल्प 5 सेकंड में रन होता है, तो अगर वो एक बार रन हुआ, 2 बार रन हुआ, 3 बार रन हुआ, उसके बाद तुमने क्लियर कर दिया, तो 3 के बाद और रन नहीं होगा। ठीक है, तो अब सेट इंटरवल का यहां पे क्या यूज है, थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया लग रहा होगा। लग रहा है किसी को आइडिया? ओके, आई गेस लग रहा होगा। सो वी हैव अ ब्रेकडाउन, बटन इज प्रेस्ड, वी हैव टू डिक्रीमेंट द काउंट। अब क्योंकि तुम लोग को सेट इंटरवल का कॉन्सेप्ट पता है, आई कैन राइट इट बेटर। टू ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक हमको करना पड़ेगा टू मेक इट वर्क? ओके ओके, सो रीसेट बटन। reset button. Okay, so how do we break it down into smaller problems? Okay, let's say we want to reset button. Okay, and say reset button, we have to break it down. So first we have to add it in the HTML. Okay, then kya, we have to add a event handler. Event handler पता है तुम लोग को क्या होता है? किसको event handler नहीं पता है, hand raise कर दो। Okay, 2-3 लोगों को नहीं पता है। Okay, so in JavaScript, okay, sorry, not in JavaScript, in browser, whatever you do, जो भी इंटरेक्शन करते हो तुम पेज के साथ, वो सारे ना इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दैट इज अ क्लिक इवेंट। मैंने यहाँ पे टाइप किया, दैट इज अ की डाउन की अप इवेंट। सो लेट्स से वी हैव अ बटन यहाँ पे। दोस्त जिसने भी रन कर लिया है, इज इट 7-4? फाइव वन 7-3 7-4, बट ये खुल नहीं रहा है। हाँ, ऐसे रिस्टार्ट करते हैं। ये मेरे में उसका 7-3 था। 7-3 में कुछ और होगा फिर। ओके, स्टार्ट हो गया। सो इसको खोलोगे तो तुमको एक टाइमर ऐप का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना और फिर यहाँ पे आ जाना, कंपोनेंट्स सोर्स, कंपोनेंट्स टाइमर। ओके, यहाँ पे तुम जो भी लिखोगे दैट विल गेट डिस्प्लेड हियर। अदर्स टू फॉलो कर देंगे साथ में। हाँ, ये ना वो गिटहब वाला जो लिंक था उसमें क्लिक मी नहीं लिखाया है, वहां पे बस टाइमर लिखा है, तो शायद वहाँ हाँ, अपडेट नहीं हुआ है क्लिक बटन। तो ये बटन तेरे को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। अच्छा, हाँ, ओके, सो इस बटन में बहुत सारे ये कम बटन इज एबल टू फायर इवेंट। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि उस इवेंट को हम लिसन कैसे करें। ओके,
console